So next point is that, third one is that vermi compost. That means vermi compost. तो all are the similar process, all are the similar process, बस slightly different है थोड़ा थोड़ा. इसमें क्या है कि it is the process when compost is prepared by using the earthworm, by using the earthworm. So this is the extra things include this, that means in this process. Earthworms जिसको हम लोग अपनी भाषा में चेरा बोलते हैं. That means you can see that in the rainy season they are grown. That means they are scooped out from the soil. That is the earthworm. Earthworm to hasten, that means hurry the process of decomposition of the plants and animal refuse. That means कि earthworm can be used for the decomposition rate को increase करने के लिए. That means जो decomposition rate है उसको increase करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, basically we can use we use earthworm. We use earthworm. That means जो भी animal wastage and plant wastage, that means कि leaves, branches, roots and animal wastage, that means excreta, cow dung and other things. All those things can be decomposed by the earthworm quickly. Hasten, that means hurry. That means जल्दी से उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, earthworm का यूज करते हैं. That means कि here the earthworm helps to break down the wastage. That means कि here the earthworm easily break down the wastage, decompose the wastage or break down the wastage, and it completely convert into the manure. This activity along with the excreta of the worms, this activity along with excreta of the worms makes the compost rich in nutrients. That means excreta along this activity along with the excreta of the worms. That means worms के excreta के साथ जो भी activity होता है, basically the compost after prepared the compost is rich in nutrients. That means जो भी nutrients मेरा है उसमें क्या होता है कि इस compost में वो जो nutrients होगा वो क्या होगा, maximum percentage में होगा और maximum amount में होगा. All the nutrients are present in vermi compost high nutrient. That means in maximum percentage, जैसे nitrogen, phosphorus, potassium, all the nutrients are available in maximum amount in vermi compost. These are the simple method to prepare the vermi compost. Next is green manure. तो green manure, have you seen that कि suppose that कि देखो crops को हम लोग basically classify करेंगे. There are two ways, leguminous plant and non-leguminous plant. Leguminous plants, that means सरसों, mustard, चना, जो भी मेरा दलहन का खेती वाला फसल होता है, that means जैसे मूंग वगैरह. These are an example of leguminous plant, and rest of the plants, suppose that maize, wheat, rice and other. These are the examples of non-leguminous plants. तो तुम देखा होगा ड्यूरिंग, जब देखो क्या होता है बेसिकली, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि फसलों की कटाई के बाद फील्ड में क्या करते हैं, हम लोग प्लग कर देते हैं, मतलब हल जोत देते हैं. हल जोतने से क्या होता है कि जो भी ग्रीन प्लांट, सपोज करो मूंग की खेती के बाद या फिर मस्टर्ड की खेती के बाद या फिर जो भी क्रॉप्स की खेती के बाद क्या करते हैं, उसमें प्लगिंग कर देते हैं और हम लोग सिंचाई कर देते हैं. दैट मीन्स तो उससे क्या होता है कि प्लगिंग के थ्रू क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं एंड उसमें इरिगेशन के थ्रू पानी देते हैं. पानी में क्या होता है कि वाटर के थ्रू क्या होता है, वो जो प्लांट्स है, वो जो ग्रीन प्लांट्स है और जो भी प्लांट्स वेस्टेज है, जो भी क्रॉप्स वगैरह सबका वेस्टेज है, वो क्या होता है, डिकम्पोज होगा. और दैट ऑल दिस थिंग्स कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू दिस मैन्योर विच इज कंप्लीटली मिक्स्ड विद द सॉइल. इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैन्योर. तो ग्रीन मैन्योर नथिंग, ये कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, कोई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है. दैट मीन्स हम लोग कुछ नहीं कर रहे, प्लगिंग के थ्रू ऑल द प्लांट्स, जो भी प्लांट्स है, जो भी वेस्टेज है, जो भी एग्रीकल्चर वेस्टेज है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि थ्रू द सॉइल में मिक्स कर दे रहे हैं. सॉइल में मिक्स करने के बाद थ्रू द वाटर वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. दैट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल थिंग्स एंड इट आफ्टर दैट मीन्स few days या few month after या फिर respect to time it will convert into the manure. These are the green manure. So we will write about the green manure. As per the statement, actually we told you कि what is green manure. The green manuring is the practice which includes growing of plants, plugging and mixing of the green crops with the soil.
टू इम्प्रूव द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी। हमने जो आपसे कहा उसी चीज़ को हमने लिखा। इसमें क्या है, प्लांट्स का ग्रो होना है, प्लांट्स ग्रो करता है, उसके बाद प्लगिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, उस सॉइल में प्लांट्स को हम लोग मिक्स करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं प्लांट्स को और प्लांट्स वेस्टेज को मिक्स करते हैं। आफ्टर दैट उससे क्या होगा मेरा, वो डिकम्पोज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स गिव अस, दैट मीन्स ये क्या है, बेनिफिशियल है फॉर द सॉइल, फॉर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो फाइनली वी completed the manure topic. That means what is manure, what are the advantages, disadvantages, types, all are completely discussed about the manure. Next topic is our fertilizer. Our next topic is that fertilizer. Next topic is that fertilizer or chemical fertilizer is the same thing. Fertilizer or chemical fertilizer is the same thing. As we know that कि fertilizer और manure are the similar things. That means they, slightly difference. दोनों में क्या है, slightly difference, मतलब थोड़ा सा difference है। तो as we know that कि manure is the natural fertilizer and these are the man-made fertilizer बोल सकते हैं। chemical fertilizer और fertilizer is the man-made fertilizer. That means कि they are prepared by the human beings in a factory, in a plant. But manure is completely natural and we are using our natural components for making the manure, but in that case fertilizer is completely the man-made. The first point is that कि a chemical fertilizer or fertilizer is a salt, ये क्या है, एक salt है और organic compound containing the necessary plants nutrients. The chemical fertilizer is a salt or organic compound. That means it contains necessary plant nutrients. Second point is that कि fertilizer supply, कि what are the necessary plant nutrients. That means कि fertilizer supply nitrogen, phosphorus and potassium. I think these are the necessary plant nutrients. So इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NPK. तो NPK दैट मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम सिंबॉलिकली, SYMBOLIC सिंबॉलिकली. दैट मीन्स दिस इज द सिंबल, नाइट्रोजन फॉर N, पोटासियम फॉर फॉस्फोरस फॉर P एंड पोटासियम फॉर K. थर्ड वन, दे आर यूज्ड फॉर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ. दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ द लीव्स, ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस, ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स, ग्रोथ ऑफ द फ्लावर्स. That means vegetative growth. And some another points about the fertilizer, कि fertilizers are one of the major components for obtaining higher yields. That means अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए, that means कि production of grains को आपको ज़्यादा चाहिए, तो you have to use chemical fertilizer in a right proportion. So that is the major component. And second point, कि fertilizer contains much higher amount of nutrients. That means as comparison to the manure, the fertilizer is rich in nutrients. So exactly कि fertilizer contains much higher amount of nutrients in comparison to the manure. The manure is a poor nutrient or fertilizer is a rich nutrients. तो fertilizer may supply one or more nutrients. As per the requirement of the plants. So I think enough for today. Next we will discuss about next of the topic in our next class. Before that you have to write all the point about the topic. That is important. I will give you 10 questions. MCQ type questions and you have to answer it. So thank you for watching this video and have a nice day.